Again, just revisiting the components of my sessions that anyhow you should be able to read case study fast, keep encircling, underlining the right words. If possible, ethical outlook words. Retention words, these are the retention words which will help you to comprehend case study in the finer manner as well as swift in the decision making side when it is about recording anything. Fair enough. And when we move toward the process of thinking and role of syllabus, this is the keywords plus syllabus approach that will help you to generate your GS answer into GS4 answer along with the keywords. Then long case study versus time management. First case study should be read in examination hall instead of reading those 10 marker questions. So that even if it is long case study, you will be able to move ahead. Okay, so this case study was shared by the Ishita, and she told me or say asked me to solve this for you guys. Okay, I don't know if she's here or not. If not, then she will get the recording for sure. Suman is young IPS officer who is posted as SP law and order, not traffic, in a district that has history of communal clashes during. No, you know that when communal clashes are there, na words like social fabric, social capital, fraternity, brotherhood, collectivism, all are in my mind. So I will just ensure that it is there. During a cultural event, a political leader made certain controversial statements or comment on political leader regarding the religion of another community that can potentially harm communal harmony in the district. The representative of aggrieved community met someone with their complaint and FIR registered in the matter, and the police department promptly started an investigation. During the questioning, the accused politically denied the charges. Okay. He claimed that he was exercising his right to freedom of expression and had no intention of hurting anyone's feeling. He even offered to tender an apology if his statement had hurt someone's religious feeling. However, the aggrieved community was not satisfied with this apology and demanded strict action against the accused. Now, community should know, being a SP, whatever you can do from your side is nothing but अरे अर्जु इट्स फाइन मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा वो बाकियों को ले डाला है फाइन सो इट्स लाइक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द accused ठीक है तो मैं एज अ एसपी आई शुड अंडरस्टैंड आई कैन नॉट टेक एनी और आई कैन नॉट डू एनी जस्टिस आई कैन ओनली इन्वेस्टिगेट charge sheet that is in my hand. Let the court decide. So strict action from my side is this only. The next day, a video went viral on social media in which the accused political leader can be seen making derogatory statement against the another religious faith. Okay. However, Suman suspects that the video going viral on the internet is doctored and someone has mischievously edited to make it more vitriolic and inflammatory. Okay. Now, ethics, cyber ethics. अपने आप में एक वर्ड है लिखते नहीं है लोग वेट कर रहे हैं पीयूष सर की क्लास में मिलेगा ये वर्ड. The video has ignited communal tensions in the district. The accused political leader belongs to influential community and his community has put their support behind him. Okay. Local intelligence has warned that some anti-social elements are trying to use the opportunity to create communal riots in the district. The entire matter has been politicized and being covered by the national media. In this situation, answer the following question. I hope case is very much clear. Now, whenever some influence is there, so I will say persuade, nudge type of things will be there. There is one more word, interpersonal competence. I'm just trying you to get into the zone. Fair enough. What differentiates a hate speech from free speech? Now, this is GS kind of answer. Correct? Hate versus free speech. Can anyone now come up how to address this question and make it ethical? I want participation from your side, and I will just request whosoever wants to speak, please raise your hand. This is a really a good question.
हाउ टू एंटरटेन जीएस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एथिक्स. चलिए बोलिए. अरे बोलोगे. Sir, hate speech is partisan. हाँ, हैंड रेस थोड़ी होगा शितांशु तेरे से. कैसे होता है? कैसे होता है कि जूम में हैंड रेस का ऑप्शन आता है. टेक्निकली रिलेटेड डॉक्टर. यस कीर्ति, सीख तब तक तो. Sir, maybe social contract theory can be evoked. कि ओके. कुछ अपनी राइट्स गिव अप करनी पड़ेंगी फॉर हेट स्पीच टू बिकम फ्री स्पीच. ओके. नहीं, इन द फ्री, टू गेट फ्री स्पीच यू हैव टू कर्व certain right which will force you not to do hate speech. Yes, This will sir. be the right setup. Yes, sir. Okay. Yes, Sitanshu sir. Sir, hate speech is partisan and free speech is non-partisanship. Not necessarily partisan, it can be. It should be neutral. No one should be hurt. Agreed. Yes, Margi. Sir, we have free speech, but with reasonable restrictions. So those reasonable restrictions also include the accountability that you have towards the public, because being an influential person, community, you have a social responsibility to uphold. Very good. Uphold peace and ensure public trust, community's trust. So I think Very these good. be the differentiating factors. One chocolate from my side. याद रखना. जाओ. Very good. भेज देना सर. चले. इतना कुरियर लग जाएगा जितने में भेजूंगा. पेटीएम. चलो भेज देता हूँ. पेटीएम बस. हाँ ये ठीक है. चलो. Yes, anyone else? No one. तुम्हें सच में हेट वर्सेस फ्री स्पीच में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा? वेरी गुड. सोशल इंटेलिजेंस. यार मुझे एक्सप्लेन कर कृति इफ पॉसिबल. इट्स नॉट ओनली अबाउट द सोशलिस्ट मूवमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस लीगल राइट तो नहीं है. हेट स्पीच कौन सा राइट है तुम्हारा? हेट स्पीच shows lack of empathy and morality. Fair enough. यार तुम लोग ऐसे शांत शांत चलोगे तो मैं क्या ही करूंगा सेशन लेके. फिर खत्म करते हैं इसको. 30-35 मिनट में आई एम ट्राइंग टू ओपन अप योर माइंड. हाँ कीर्ति बोलो. Sir, to differentiate hate speech from free speech, I think attitude of the receiver also matters. If the receiver is not tolerant, so everything will be hate speech. Yes, good. Good. So it's not only about the speaker, it's about the I will say receiver as well, listener as well. Very good. दूसरा perspective, very good. मजा आया. And also, sir, Aristotle का बोल सकते हैं कि the like action should reflect virtue, वैसे ही speech should also reflect virtues. Very good. एक चॉकलेट तुझे भी. चलो. Agreed. Very good, Gopal. It is there as well. So I guess a similar tone what Kirti has just mentioned. Done. आरजू बोलो. सर अनएग्जामिन्ड लाइफ का जो कंसेप्ट है, अगर हम अपनी स्पीच को एग्जामिन करें तो फ्री स्पीच और हेट स्पीच को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल रीजनिंग. फेयर एनफ. आई गेस जितने मेरे पास पॉइंट है अब साथ में आ गए. माय पर्पस वाज ऑफ गांधी जी ओनली. सर हेट स्पीच एथिकल इगोइज्म का भी एग्जांपल हो सकता है. ज्यादा थोड़ा जार्गनिस्टिक हो जाएगा इविल से.
बहुत देखो, मैं ज्यादा जर्गनिस्टिक होने के लिए इसलिए मना करता हूँ, कई बार ज्यादा टेक्निकल होने के चक्कर में नंगा लगती है। डन। और किसी को कुछ बोलना है? मार्गी एंड आई विल से कीर्ति, जो चॉकलेट लेनी हो मुझे पेटीएम बता देना, मैं कर दूंगा। फेयर इनफ। हैप्पी विद बोथ ऑफ यू। चितांशु यू ट्राइड हार्ड, लेकिन तेरी किस्मत में सिर्फ गाली ही है। ठीक है, अब आई विल गिव यू माइंड पर्सपेक्टिव। जस्ट लुक कि इसको डिकोड कैसे करना है। हेट स्पीच and freedom of speech. Whatever you said, all are good points. I'm just giving you some certain perspectives. So, hate speech and freedom of speech both are just speech. Speech is way of communication. Communication should be productive. ये मेरा सोचने का तरीका है, इसका आंसर से कुछ लेना देना नहीं है. When I differentiate, if any communication develops wedge, mistrust, hatred, and takes away peace of society, it turns into hate speech from freedom of expression. Means on freedom of expression which have these elements, it is nothing but hate speech. So a fine line of difference. मेरा जो एनालिटिकल मेथड है वो समझ में आया या नहीं आया, या किसी को क्रॉस क्वेश्चन करना है यहाँ पे? क्लियर? सर इस आंसर को टैबुलर फॉर्मेट में लिखेंगे या जैसे आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में? नहीं, ये मैं बताऊंगा अभी। ये रियलिटी जब आप पॉइंटर्स में लिख दोगे ना, इसका समरी है बस जो मैंने लिखा है, इसीलिए मैंने कहा वो पॉइंट सारे आ गए हैं जो मुझे बोलने थे। मैंने जस्ट इसको एनालिसिस लिखा है, क्योंकि इन सच क्वेश्चंस यू व्हाट यू विल फाइंड, यू हैव जस्ट रिटन सर्टेन पॉइंटर्स एंड इट लुक्स लाइक इट इज अनएड्रेस्ड, एंड व्हेन यू प्रेजेंट 2-3 लाइनर एनालिसिस द क्वेश्चन इज फेयरली एड्रेस्ड. समझ गए आप लोग कि व्हाई आई डिड दिस 3-4 लाइंस? Yes, sir. दिस वाज द ओनली रीजन आई मेंशन दिस. यस, उसको बीच में बोल रहा था कुछ. यस, कोई नहीं बोल रहा था. सितांशु के साथ किसी एक की और आवाज आई थी मुझे. सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ. इसके रिलेटेड नहीं, पर जैसे ट्विटर पे या वैसे कोई थ्रेड्स आते हैं जो कोई भी कम्युनिटी को एक मतलब उसका कुछ हाईलाइट करते हैं कि ये एक्शन हुआ वो एक्शन हुआ, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लाइक यू विल क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज तो करोगे जो गलत है, पर वो फिर अगर कम्युनिटी डायरेक्टेड हो जाता है तो वो हेट स्पीच हो जाएगा या वो स्टिल फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा? मैं कहूंगा कि हेट स्पीच प्रमोट करने वाले हो गया वो. हेट Okay. स्पीच आई विल से जिसपे एक्शन वैक्शन लिया जा सके. इंसाइट कर रहे हैं बेसिकली हेट स्पीच. हाँ एग्जैक्टली. ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, चलो मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कुछ इशू है? किसी को लग रहा हो कि अनएड्रेस्ड है? नन? नो सर. फेयर इनफ. मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. Why does social media have a very strong influence over the actions and thoughts of its users? A very good question, I will say. Social media influence on users. ये नेक्स्ट सेल में मेरा क्वेश्चन हो गया. Why does it have? In digital era, recognition. Very good, Ashi. Recognition era. Sorry, in the digital era, recognition coming from the, I will say, social media side.
So their action is social media based. Social validation, fair enough. Cognitive capture, very good. Yes. रेपुटेशन है डिजिटल एरिना, सत्यम वही बात हुई, मैं रिकॉग्निशन वाली बात कर रहा हूँ जब. हाँ अर्जु बोलो. Sir, one is the accessibility. Second is it is a democratic space where everyone can put forward their opinion. Other than that, it provides you an opportunity to be anonymous. तो social responsibility और credibility हम evade कर सकते हैं. ठीक है, agreed. Continuous inflow of information repeatedly being exposed to same idea. इसको मैं सेकंड ईयर में रख दूंगा, नॉट दैट कन्विंसिंग कि यूजर इससे होगा क्या. व्हाट एल्स? अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा अभी तक मेरे एक जाल में तुम फंस गए हो? तुमने केस का कुछ भी इस्तेमाल किया इन अवर क्वेश्चन? और मैं भी बस बोला, मैंने कहा कुछ एड्रेस हो गया क्या? नो वन आस्क्ड मी कि सर केस का क्या करना है. मतलब इट हैज बीन गिवन 3 पार्ट ना. कोर्स ऑफ एक्शन तो ठीक है, इन दोनों में क्या करना है? डिड एनीवन आस्क? एनी आंसर्स? क्या करेंगे आशी ऐसे में? ये तो तुम ऐसे ही आंसर कर दोगे. एथिक्स का क्वेश्चन है, मतलब पार्ट ए का क्वेश्चन हो गया ना फिर ये. व्हाई इट हैज बीन इन द केस स्टडी? सर सबसे पहले तो जो डॉक्टर्ड वीडियो है उसके रिगार्डिंग हम इन्फॉर्म अरे हम करेंगे कोर, कि मैं कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ ए और बी पार्ट. ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ सेक्शन ए में डाल देना चाहिए था? केस स्टडी में क्यों डाला है? तुम लोगों ने मेरे से एक भी बार नहीं पूछा कि सर केस स्टडी में डाला क्यों? ए और बी पार्ट तो हमने ऑलमोस्ट एड्रेस कर दिया विदाउट लुकिंग इनटू द केस स्टडी. क्यों किया हमने ऐसा? नहीं पता. चलो रितिका. सर मुझे एक चीज लगती है कि स्पेशली बी पार्ट में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे हम केस स्टडी से कुछ कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं एक दो जगह. तो ये ए में नहीं डाल सकते? सर ए में भी डाल सकते हैं बट इतने एग्जाम्पल्स है नहीं, ओवर हो जाएगा, रिपीटेटिव हो जाएगा फिर. नहीं, मतलब कर सकते हैं. उसमें फ्री स्पीच में मैं आपकी अपोलॉजी डाल दूंगा, हेट स्पीच में आपका वायरल कंटेंट डाल दूंगा. ओके. 2 एग्जांपल दे रहा हूं. Are you guys getting it? Whenever this was the key in this question, whenever you are having GS kind of questions or section A kind of questions within your case study, make sure that when you are addressing the case study, you take certain example from the case study itself. So when you are talking about influence on the social media, so you can say, for example, in above case study, the politician is seeking social validation from his viral content. Again, the politician has tried to minimize the damage by tendering apology to the community. Are you able to get it? What I want to say? Case should not be ignored. And before starting the case itself, you should have mentioned the background. The above case study reflects cyber ethics should be there or something like that. हमने इंट्रोडक्शन की बात ही नहीं किया. तुम लोग क्या करोगे टेस्ट वाले दिन मुझे पता नहीं है. If I'm coming directly to the question, this was my only purpose. To be very honest, you guys are mature audience. Either I would have taken 5 sessions. I'm completing this in the 4th session. Even this 4th session is 3rd session only. 2 case study per day, whatever I have to teach. But the process will be the same. No one asked me, sir, where should be the stakeholders here? What is the use of stakeholder? You guys are here just to get the free chocolates, I guess. That too only some of you deserve. Now, let's see stakeholders first. Police, politician, SP, community, victim community,
society, government, it might be a law and order problem, CSO, NGO, media, social media. I told you guys you should write or not in the paper, it totally depends. Suppose if there are 6 questions, you identify stakeholders only in 4, 3, 2, I do not care. But do write it in some corner of the paper. Now, if you look at the hate speech, you will get the hate speech, free speech from the different side. It might be free case, but this free speech for politician might not be free speech for police. This is what you have to deduce while answering this case. Had it not been, then why police would have registered FIR? Are you able to get it what I mean? Then, hate speech and free speech. Talking from the societal perspective, any speech which creates hatred and all, the analysis that I provided, I got that analysis from there only. I did not deduce. कोई भी कहानी बनाई मैंने उस टाइम पे तुम लोगों को समझाने के लिए. पॉइंटर था दे, लेकिन बैकग्राउंड यहाँ से क्रिएट हो रहा है स्टेक होल्डर से. आप लोगों ने मिलके वो आंसर दिया है, ऐसा नहीं है किसी एक ने मुझे 4-5 पॉइंट दे दिया, अपार्ट फ्रॉम मार्गी एंड आई गेस कृति. मजाक चल रहा है यहाँ पे. Fair enough. Then coming to the point of view from the government. Government should protect the free speech. Government should curb the hate speech. Protection of free speech is the ethical side from the government. Then you could have quoted any statement, सत्य कितना कड़वा है and all, उस टाइप की अगर if you want to mention. इसने पूछा ना कैसे डिफरेंशिएट करोगे. There should be certain parameters, how it affects society, how it affects law and order, how it affects. I'm getting these points because I got these points from my stakeholders. What is the difference between ethical and opportunist politician? Ethical politician will ensure that his free speech should not turn into. I'm giving you n number of points. It might not be possible to write all, but I'm just giving you for the time being. You guys were just fogged for the time being. Brain fog था. अगर आपके 2-3 पॉइंट के बाद जीएस की तरह आंसर करने लग रहे हैं. This is the point I wanted to make. Sorted. Can I say first question is sorted now from the ethical point of view as well as including the case study. Any question, any cross question जहाँ पे तुम मेरे से convince नहीं हो, you can I will say directly argue with me. Yes, no, कुछ thumbs up, अब तुम कुछ बोल दो. Blank screen है वैसे भी मेरे पास. Fair enough. So this is the situation. Now coming to the second part, why does social media have very strong influence over? Okay, now from the social media perspective, always remember these things. Role of anything which influence you comes from validation, recognition. Third, dissemination. Information is easily disseminated, whatever you are doing. Fourth, double-edged sword. You should also mention it. बेसिकली कंसेप्ट वो होता है, बद हुआ तो क्या हुआ, नाम तो है. इवन बैड नेम इज अ नेम. Then see, social media promotes connectivity. अब this connectivity can be related to, sorry for the bad handwriting, मुझे लगता नहीं इसका टैप का कुछ ज्यादा फायदा होता है, but still shows the collectivism. यहां पे ये भी पॉइंट आउट किया जा सकता है
then it is easy to persuade, nudge, convince, whatever you want to mention. सेकंड क्वेश्चन में कोई और पॉइंट किसी को ऐड करना है? देन आई विल मूव टुवर्ड द कोर्स ऑफ एक्शन. सर कलेक्टिविज्म के साथ साथ इट ऑल्सो डीपन सोशल फॉल्ट लाइंस ना, क्योंकि वो रीइंफोर्स भी करता है जो आपका प्रेजुडिसेस या बायसेस होते हैं, तो और आपको एक उसके लिए भी सोशल वैलिडेशन मिलता है. That's why I wrote double S sword. ओके सर. Yes, anyone else? तुम लोग सो रहे हो क्या सारे? Continue repeatedly being exposed to the same idea. ठीक है फिर चलो गाना है तो आगे बढ़ू फिर मैं. Anyone else? सर वही इको चैम्बर कैन स्ट्रेंथन योर वैल्यूज. हाँ आपको चलेगा. डायरेक्टली सा एक्सपोजर नहीं हो पाता है क्योंकि एल्गोरिदम वैसे काम कर रहा है. ठीक है. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन पे चले अब. Who wants to go for the course of action? मेरे लिए बहुत मस्त केस स्टडीज होती हैं, वरना मैं सॉल्व भी कर दूंगा एक बार में पूरी, क्योंकि आई हैव वर्कड ऑन these issues in life, I will say. Somehow was fortunate enough to work as a police officer without being any power, having any power. Yes, कोई सॉल्व करने में हेल्प करेगा मेरी, वरना मैं एक बार एक फ्लो में कर दूंगा बस. अब मैं ना करूं तो ज्यादा मजा आएगा मुझे. चलो रितिका शुरू करो. रितिका, am I audible? हेलो. यस सर यू आर. ये कहाँ एड्रेस कर, और किसी को कुछ नहीं बोलना. आशी, यू वर गिविंग सम सॉल्यूशन आई गेस. तुम लोग डिनर कर रहे हो क्या क्लास में बैठ के? यस सर. हाँ. सर उसमें कोर्स ऑफ एक्शन में पहली चीज़ तो यही होगी कि हमें जो वीडियो है उसका वो बताना पड़ेगा कि वो मतलब वायरल है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो फेक है या नहीं. तो एज अ पुलिस ऑफिसर मैं सबसे पहले ये करूँगी कि उस वीडियो का जो रियलिटी है, जो नेचर है, वो बताऊँगी. ऑथेंटिसिटी. जी सर. ठीक है, अग्रीड. मैंने पिछली बार में आपको बोला था एक ऐसे डिजाइन करो कि एक इमीडिएट सॉल्यूशन फिर लॉन्ग टर्म. पहले इमीडिएट पे बात कर लो. हाँ जी सीतांशु साहब बोलिए. Sir, involve the religious leaders of the area to lower down the tensions. वेरी गुड. क्या बोलते हैं इसको? एनीवन फ्रॉम द इंटरव्यू बैच, क्या बोलते हैं इन कमिटीज को? वेरी गुड सत्यम. पीस कमेटी और पीस पार्टी. ठीक है. आरजू. सर जो इंटेलिजेंस का इनपुट है एंटी सोशल एलिमेंट्स का, उनको भी पहले टेक केयर करना पड़ेगा, चाहे तो फेयर इनफ. प्रिवेंटिव हो या फिर उनका स्प्रेड रिस्ट्रिक्ट किया जाए. प्रिवेंटिव डिटेंशन और एंटी सोशल एलिमेंट्स. ठीक है. अच्छा, कितने अच्छे हो तुम लोग, कहीं कुछ थ्योरी वगैरह लिंक नहीं कर रहे. सीतांशु और कुछ है? सर मीडिया को इन्वॉल्व करना है कि थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म को कंट्रोल करें. वेरी गुड. कन्विंसिंग मीडिया. सर जो राइट्स प्रोन वाले एरिया हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा देनी चाहिए. वेरी गुड. ठीक है.
यस सर इस वाले पॉइंट में हम ड्यूटी एथिक्स लिख सकते हैं कि एज पुलिस ऑफिसर मुझे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। फेयर एनफ, ताकि तू पॉलिटिशियन से इन्वॉल्व ना हो, अरे सॉरी इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, अग्रीड। सर इंटेलिजेंस में चाणक्य को ला सकते हैं क्या? कैसे? फॉर एग्जाम्पल एंटी कम्युनल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स का इंटेलिजेंस गैदर करने में एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव सम ग्राउंड लेवल, क्या बोलते हैं उनको, स्पाइस। लोकल गुड़ इंटेलिजेंस। पुरुष, लोकल इंटेलिजेंस किसने बोला है? सर मैंने। तुझे तो नहीं दूंगा, छोड़। गुड़ पुरुष बोलते थे आई गेस चाणक्य के टाइम पे, और लोकल इंटेलिजेंस, ठीक है, फेयर इनफ। अब तुम लोग सच में इतने बेवकूफ हो? तुम्हें स्टेप्स दिख नहीं रहे यहाँ पे? सर अगर पॉलिटिशियन ने माफी मांगी है तो उसकी एक दोबारा रियल वीडियो फैक्ट चेक वाली वीडियो के साथ भी बनवाई जा सकती है। चॉकलेट मिलेगी। दुकान खोलनी पड़ेगी आज मुझे फिर, अगर मैं वापस सी बेसिकली ऑन सीरियस नोट, यहाँ पे ही मेंशन कर देना चाहिए था आशी आपको, व्हेन यू आर चेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियो ना, एट द सेम टाइम पुटिंग अपोलॉजी वीडियो ऑफ द पॉलिटिशियन फ्रॉम गवर्नमेंट सोशल मीडिया एंड डायरेक्टिंग मीडिया टू पुट फॉरवर्ड। तो जो सेंसिलाइजेशन के लिए मना किया ना आशी, साथ के साथ कर होगा, और ये इमीडिएट स्टेप होगा। दिस इज वन ऑफ द राइट थिंग दैट यू विल डू। ठीक है, सॉर्टेड है, तो ये साथ के साथ चलेगा। और किसी को कुछ बोलना है, वरना मैं सॉर्ट कर दूंगा इसको, मेरे को 2 मिनट में लगेगा बस। लॉन्ग टर्म में किसी को कुछ बोलना है? सर सबसे पहले तो ये इंटर कम्युनल डायलॉग प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए हमको। ये जो पीस कमेटी की बात की थी ना हमने, पीस पार्टी, these are the platforms where all the religious leaders and the civil servants and I will say NGO CSO workers come together on the same platform. This is for the same, this is I will say peace committee। आप वर्ड यूज करना, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी, इसमें डीएम एसपी दोनों होते हैं। हाँ कीर्ति बोलो। सर एक ये 1 मिनट, पहले कीर्ति। Sir, trust building among the masses also, apart from just discussion with the leaders. वेरी गुड वेरी गुड, कीर्ति क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? Sir, ये लॉन्ग टर्म में, IEC, वेरी गुड, शाबाश, डन। और always remember for long term bono homie, you should promote peace sports in the district। ठीक है, गांव देहात में पूरा तुम डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में स्पोर्ट्स का आयोजन वगैरह कर दिया। ठीक है, हाँ मार्गी बोल यार। Sir, clear delineation between hate speech and free speech and regulation of media, मतलब basically जो doctored video था। तो लॉ बनाएगी वहां बैठ के एज एसपी। अच्छा ठीक है। सर लॉन्ग टर्म एसओपी अगर आगे कभी ऐसा कुछ हो तो पुलिस को शाबाश शाबाश, चल अब दे दूंगा तुझे एक चॉकलेट। ठीक है, देखो एसओपी इज लाइक whenever you're dealing for the situation for the very first time and you create any kind of system which can be followed by the I will say upcoming SPs or something, that is for sure। So I will say documentation of the things, at the same time ensuring how a particular wing can be there। अगर कम्युनिटी क्लैशेस बार बार हो रहे हैं तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तो बना सकता है एसओपी, अरे एसपी। तो वो एसपी वगैरह का काम आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, दैट हाउ यू हैव टू रिएक्ट। मतलब आपका दिमाग चल रहा है एज आईपीएस ऑफिसर में भी, आप प्रेजेंट ना हो तो एटलीस्ट थाने लेवल पे भी तो उतना दिमाग चले लोगों का। ठीक है, वेरी गुड।
उम्मीद पे नहीं खरा उतरना तुझे, ठीक है, तू सिर्फ गाली खा। आरजू। डॉक्टर्ड वीडियो थी, तो एक लॉन्ग टर्म मेजर ये हो सकता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, साइबर ब्रांच को और मीडिया हाउसेस को यूज करके एक सेमिनार करवाया जाए रेगुलर, जहाँ पे ये कैपेबिलिटी डेवलप की जाए कि लोग भी आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या सुनो रियल सुनो, है, क्या डॉक्टर्ड है। ये जो आईसी वर्ड बोला ना कीर्ति ने, ये इसीलिए बनवाया था मैंने, इसी से रिलेट करो सब कुछ। इसमें दो हेडिंग डाल के 2-3 पॉइंटर लिखो हमेशा, ठीक है। कीर्ति कुछ और बोल रही थी बीच में, आई गेस। नहीं सर, वो यही था जो अभी इन्होंने बोला। ठीक है। श्वेतांशु। नहीं सर, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हैंड रेस क्यों कर रखा है? फास्टेस्ट में फर्स्ट खेलता हूँ मैं। ठीक है, तो स्कूल्स कॉलेजेस में नज एंड परसेप्शन फॉर कम्युनल हार्मनी आईसी के अंडर आ जाएगा आशीओ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स टू प्रिवेंट फर्दर इशू, वो हमने ले लिया है इमीडिएट स्टेप में कि हम इनको सीधे भेज देंगे जेल में। और किसी का कुछ है? ऑलमोस्ट आ गई चीजें, बस मैं स्ट्रक्चर कर दूंगा फिर। कोई थ्योरी लिंक करना चाहेगा किसी स्टेप के साथ? सब कुछ तुम्हारे सामने है। एक दो थ्योरी इफ यू गाइस कैन मेंशन, इट विल बी गुड। सर यूटिलिटेरियनिज्म। कहाँ लिंक कर रहा है इसको? सर कि जब आप कोई एसओपी बनाएंगे कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, तो उसमें किसी का फ्री स्पीच को थोड़ा सा कर्व करा जाएगा, बट दैट वुड बी इन द ग्रेटर गुड। ठीक है। सर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंटर कम्युनिटी स्पोर्ट्स या वो सब कराएंगे तो उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। ठीक है। सर अनेकवाद। ठीक है। और थ्योरी ऑफ जस्टिस नहीं यूज करोगे तुम कहीं? रिमेडियल जस्टिस फॉर फेयर ट्रांजैक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कर सकते हैं, चलो। यस, व्हाट एल्स? सर बुद्धिज्म के एथिक्स जैसे रैशनैलिटी, मतलब मतलब वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन द लाइट ऑफ रीजन रादर देन सोशल इन्फ्लुएंस। ठीक है। यूनिवर्सलिज्म तो एड्रेस नहीं हो रहा यार गोपाल कहीं के, कैसे? चलो, अब तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, लेट मी कंक्लूड so that you can be free on time as well. First, immediate measure, as I told, it will be about the video. ठीक है? First, ensure that apology video should be there, doctor video should be down there. I will utilize my cyberspace. It shows interpersonal competence. Second, religious committee or the peace committee meetings, district peace committee meeting. Here, SP will show social awareness. Third, involving media, he will show emotional intelligence as well as social intelligence. Means involving media and other players. At the same time, since he is the SP, charge sheeting the politician deontology. Fair enough. ये इमीडिएट स्टेप्स ले रहा हूं मैं बिल्कुल, जिससे टेंशन कम हो गई, ठीक है। देन एट द सेम टाइम influential community is there, therefore
पुलिस बंदोबस्त, then preventive arrest and all. So these 6-7 points will be my immediate steps. Suppose that when it comes to the long term wala side, involving DM. I did not write DM willfully. जब SP आएगा तो DM अपने आप आएगा. Ensuring IEC campaigns, school, colleges. ये शायद मैंने आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे समझाया होगा. Reasons, कोई भी कम्युनिटी राइट्स होगा, it will not be led by any बुढ़ा आदमी. It requires people like you and I, जिनके पास एनर्जी हो. Here are the right energies we need to tap. ये समझा इसलिए रहा हूँ ताकि तुम लिख पाओ अगली बार. ठीक है. यहाँ पे NGO CSA भी इन्वॉल्व कर लूंगा to ensure communitarian approach. Then within the long term, promoting alternative opportunities instead of rights. ठीक है. अगर वहां पे communal है तो I have to see whether education is there or not, whether I will say employment is there or not. If not, then again DM. That's why I mentioned DM specifically. SP cannot deal with the communal problems until unless the DM is involved. Be very much clear about it. Okay. Then third, it is about SOP. You are a good SP. What if the incompetent person comes? So creating SOP, training module and manual for the principal. Now, whenever you do these things, you show your leadership skills. Leaders create more leaders. Okay, so you are setting precedents. This you should mention. When SOP is there, okay, you need to ensure that at the same time, capacity building for such incidents. So it might be a case the SP should prepare a report and send it to the seniors, maybe commissioner and the home ministry of the state. Reason, they will be having access to think tank and all. This is also the work of SP. बनोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ तो गलत नहीं बताऊंगा याद. ठीक है. मतलब ये नहीं है कि तुमने पहले से किसी पॉलिटिशियंस को खराब कर रहे हो. ये इंटरनल डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स होती हैं हमेशा पोस्ट डेट एक्शन. ठीक है. देन इंश्योरिंग, यहाँ पे अच्छा एक चीज और बोलना भूल गया, चार्जशीट वगैरह बहुत स्ट्रांग बनाओ उसके अगेंस्ट. ठीक है. अब चार्जशीट वगैरह जब स्ट्रांग है तो इंश्योरिंग इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड. ठीक है. तो यू शुड नॉट बी दैट बोनोहोमिकल विद द, मतलब ये नहीं लिखना विद द अपोजिशन एंड ऑल. जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे कम्युनल राइट्स को एड्रेस करने के लिए, लास्ट स्टेप होता है गोइंग बैक टू द सोसाइटी इन द लॉन्गर टर्म्स. आशी, तेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे आपने पॉइंट्स बोले थे और ये मेरा फेवरेट पॉइंट है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. किसी को याद आ रहा है? व्हाट इज इट? What is it? Community policing. So this was I was expecting, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई थी इसके अलावा. ठीक है. सो द केस स्टडी सेम सॉल्व, हमने सब कुछ ऑलमोस्ट पूरा कर दिया था. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू लुक, मेक श्योर व्हेनेवर GS काइंड ऑफ क्वेश्चंस you should quote certain examples from within case study as an example to solve these questions, so that it becomes little bit of relativity and all. Fair enough? Clear?